नमस्कार। स्टीवन कोटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 7वें अध्याय पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं एनी डिलार्ट के एक बहुत ही गहरे ख्याल से। उन्होंने कहा था कि हमारी जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि हमारे हर दिन के कामों का ही एक आईना है। मतलब जो बड़ी बड़ी सफलताएं होती हैं ना, वो असल में रोज की छोटी छोटी कोशिशों से ही बनती हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। खैर, इसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त है दुनिया को एक एक्सपर्ट की नजरों से देखना। यहां पर लेखक एक बहुत बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए जोश या मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, लेकिन गेम में टिके रहने के लिए, असल कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ सीखना और एक्सपर्ट बनना ही काम आता है। और इसी पे साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन ने रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनके पास 8 तरह का ऐसा खास ज्ञान होता है जो आम लोगों को नजर ही नहीं आता। तो चलिए जरा देखते हैं कि आखिर ये है क्या। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सब कुछ शुरू होता है देखने के नजरिए से, जिसे हम परसेप्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स किसी भी सिचुएशन की तह तक जाकर उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को देख पाते हैं। जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर, वो सिर्फ मोहरों को नहीं देखता, वो पूरे खेल के पैटर्न को एक साथ देखता है। अच्छा, तो ये तो हुई देखने की बात, पर सवाल ये है कि एक्सपर्ट्स इस नजरिए का इस्तेमाल करके असल में करते क्या हैं? वो कैसे एक्शन लेते हैं और कैसे बदलते हुए हालात में खुद को ढालते हैं? तो ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये जो 8 बातें हमने देखी, ये सिर्फ कुछ अच्छे सुझाव नहीं हैं। नहीं, बल्कि यही वो असल सामग्री हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे असंभव को संभव बनाया जाता है। इनके बिना कोई भी बड़ा सपना हकीकत में नहीं बदल सकता। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ये वो ज्ञान है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो इसे विकसित कैसे किया जाए? तो जिस इंजन से ये एक्सपर्टीज बनती है उसका नाम है आजीवन सीखना, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ नई नई चीजें सीखना नहीं है। इसका असली मकसद है फ्लो की उस कमाल की स्टेट में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना। वो स्टेट जब हम अपने काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता और हमारी परफॉर्मेंस पीक पर होती है। और ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि ये हाई फ्लो लाइफस्टाइल का साइकिल काम कैसे करता है। आप एक बड़ी चुनौती लेते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए नए स्किल सीखते हैं और फिर चुनौती को और बड़ा कर देते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है और हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। लेकिन यहीं पर असंभव को हासिल करने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है। हमारे दिमाग में सीखने की जो भी प्रक्रिया चलती है, जैसे कि पैटर्न पहचानना या फिर चीज़ों को याद रखना, वो सब हमारे लिए अदृश्य है। ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। और यहीं पर इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सवाल सामने आता है। जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, उसे हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो आखिर इस पहेली का जवाब क्या है? खैर, इसका पता तो हमें द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल पर हमारी अगली पेशकश में ही चलेगा। तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। Hey, welcome to our explainer. Today we are jumping into a really key chapter from Stephen Kotler's The Art of Impossible. This one's called The Ingredients of Impossible, and it is all about, you guessed it, the fundamental building blocks of peak performance. Let's get right into it. All right, so for anyone who's been following along with the book, we're diving straight into Chapter 7. And hey, if you're new here, don't even worry about it. This section absolutely stands on its own as a powerful look at what it really takes to do something incredible. So Kotler kicks off the chapter with this really profound quote from writer Annie Dillard, and it just perfectly sets the stage. What it's really getting at is this. Achieving the impossible isn't about some single lightning strike moment of breakthrough. Nope, it's about the small, consistent things we do day in and day out. It's all about the process of learning. So what's the real currency for doing amazing things? You know, if you ask most people, they'd probably say it's motivation. That fire in your belly that gets you started. But, as the book argues, motivation, that's really just page 1 of a much, much longer story. Okay, so here's the big distinction the author makes. Motivation gets you to the starting line, for sure, but it's learning. Learning is what actually powers you through the whole journey. Think of it like this. Motivation is the spark that gets the fire going, but learning is the fuel that keeps it burning long, long after that initial excitement is worn off. So,
This is the crucial point. The real capital for achieving the impossible isn't just passion or drive. It's the actual, tangible expertise you build up. It's that deep well of knowledge you create that lets you see opportunities and solve problems that, honestly, were just invisible to you before. This is the bedrock for doing what has never been done. So, what does this expertise actually look like in the real world? Well, it turns out that experts, they literally see the world in a different way. They can perceive these invisible ingredients that the rest of us just completely miss. There's this psychologist, Gary Klein, who wrote a fantastic book called Sources of Power, and he just breaks this down perfectly. He actually identified 8 specific types of knowledge that make up the blueprint for mastery. And this isn't magic, It's a specific and, more importantly, learnable set of skills. So this is what that expert vision really is. It's the ability to see patterns where other people just see noise. It's spotting anomalies, those tiny little details that just don't fit. Experts can see the big picture. They deeply understand the way things work, and they can spot chances to improvise on the fly. And this one's huge, they also know their own limitations. These 8 points, these are the true building blocks of expertise. Just let that sink in for a second. This is not just some helpful list of suggestions. This knowledge base is non-negotiable. These are the literal ingredients of impossible. If you don't have them, you just don't have the tools you need to make a real breakthrough. Okay, so if that's what we need, this incredible expert knowledge base, then the big question is, how do we actually build it? Well, the answer is all about creating a powerful, consistent engine for your own growth. The term for this whole engine is lifelong learning. And look, it's more than just a buzzword, right? It's the absolute foundation of what the book calls a high-flow lifestyle, that sweet spot where we feel our best and perform our best. And the benefits here are they're huge. Lifelong learning keeps your brain sharp, it boosts your confidence and your career skills, but the big one, at least for what we're talking about today, is that it's the mechanism that keeps you in a state of flow. Because as the challenges get bigger, your skills have to get bigger to meet them. Lifelong learning is how you bridge that gap. But, and this is where things get really interesting, the book throws a curveball, a really fascinating paradox. If learning is this critical, we should just focus on improving it every single day, right? Well, there's a pretty big catch. See, it turns out that this whole process of getting good at something, of building that mental capital we've been talking about, well, it hits this major roadblock. It's a paradox that affects every single one of us. And here's the heart of the problem. The actual act of learning, it's pretty much totally invisible to us. We can see the results of learning, right? A new skill, a problem we finally solved, but the process itself is happening completely behind the curtain in our own minds. So why? Why can't we see it? Well, it's because the key machinery in our brain, things like pattern recognition, memory consolidation, building new neural networks, it's all designed to work automatically, subconsciously. It just happens, way beyond our conscious awareness, or, as the author puts it, beyond our ken. And all of this leads to the central, and I mean the central question of this whole chapter. If the most important skill for achieving the impossible is one we can't even directly see or feel, then how in the world are we supposed to get better at it? So here's the big takeaway, the thing to really chew on. The path to doing something extraordinary isn't just about grinding or being motivated. It's about learning how to influence a process you can't even see. It's about mastering the invisible. So that's the million-dollar question, right? How do you improve what you cannot see? That's exactly what we're going to break down in our next explainer when we dive into Chapter 8. Thanks for hanging out with us for this one, and we will definitely see you then.